This is still the beginning of the episode, so something has to change. Say hi to Auntie Charlotte. Oi! Dhadkan Zindagi Kii, episode 14, Race Against Time. आदिति करपाटे जी, बहुत धन्यवाद आपको. आपने बताया इसको रिएक्ट करने के लिए. ये लीजिए आपके लिए. मैं कहूँ. Oh, they're checking their schedule to see where they're posted, like what work they're doing. फिरोज यार, तुझे फीवर है? Oh, so this guy has a fever. Fever is good. That's Fever right. means तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन है और तुम्हारी बॉडी से फाइट कर रही है. Fever is good because it is fighting against infection, but it is not good because then it means you have a problem going on. रेस्ट ले ले आज. Taken off. No Sia. You and I are the only one जिसपे किसी का ध्यान नहीं है. ऑफ लिया तो और किसी का ध्यान नहीं जाएगा. This used to be a problem when doctors had fever, because they love working, they used to come to the hospital. But this is very important to remember, especially for junior doctors if you're watching. If you have fever, just stay home. Don't go to the hospital because if you have an infection, you can spread it to other people and also patients. बातों से तो यही लग रहा है कि तुझे पक्का फीवर है. So this episode starts with someone having fever. He has come to the hospital. I'm guessing he's going to spread this infection to others. What nonsense. सिस्टर मीना, आज कितने पेशेंट लाइन अप हैं? आज वार्ड कितना खाली खाली है ना, बहुत शांति सी है, कोई पेशेंट नहीं है. Oh, we have a patient. बहुत पेन. Got gotten hurt? आइए. Accident? Oh, we have another patient ये here. किसके पेशेंट हैं? अमर शर्मा. Mr. Amar Sharma, age 32, presented with pharyngitis and fever. टेस्ट में मलेरिया पॉजिटिव आया था, तब से हॉस्पिटलाइज है because of malaria related anemia and mild jaundice. टोटल बिलीरुबिन ऑफ 4.8. क्लोरोक्विन का कोर्स चालू किया है. If found resistant, we will switch to artemether lumefantrine. उनका ग्रेड ऑफ पैलर चेक कीजिए. Wow. I haven't heard this for more than 20 years. Grade of pallor is to check how severe the anemia is. उनका पाम देखिए, चेक फॉर पिंकनेस. उससे आपको पता चलेगा उनकी एनीमिया का लेवल क्या है. Level of anemia. How much anemia there is. I don't think doctors these days do this test anymore. They just check the blood for hemoglobin. When I did MBBS, we remember checking the grade for pallor. He's checking the grade of... Ui. He threw up on him. Dr. Ansari is so happy. डॉक्टर महादेव, इनके वॉमिट में तो ब्लड है. पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है और इसी वजह से वॉमिट में ब्लड हो सकता है. VWF टेस्ट करवाइए. हमें ऑक्ट्रोट्राइड शुरू करना पड़ सकता है. डॉक्टर अडवाणी, ऑर्डर एन USG ऑफ लिवर इमीडिएटली. यस डॉक्टर. Ultrasound of liver. Octreotide is a medicine that's used to control any bleeding from the stomach. I've used it a few times. So this is the guy who had pain in his abdomen. चोट कैसी लगी तुम्हें? Okay. डॉक्टर साइकिलिंग कर रहा था, पीछे से बस आके टक्कर मार के चली गई और मैं जमीन पर गिर पड़ा. Young healthy guy. बस का टायर बस टच होके निकल गया. डॉक्टर, On a scale of 1 to 10, कितना दर्द हो रहा है आपको? 1 बहुत कम, 10 बहुत ज़्यादा. So that's the most frequently used scale to assess the amount of pain. 1 to 10. We use it every day in practice. 5 पक्का? 7. Oh good, you're here. Deep cuts में need compression bandaging. पूरा चेक करिए प्लीज एक बार. डॉक्टर साठ है, पहला दिन इतना लेट. He's ignoring his senior doctor. पार्शियल थिकनेस वुंड. तुम्हारा ट्रीटमेंट प्लान क्या दीपिका? Localized pain है, USG of abdomen करेंगे पहले. मैं भी होता तो यही करता. मैं कर लूँगी. आप, थैंक यू. मैं हूँ यहाँ पे, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो. डॉक्टर साठे हैं उसके लिए, हम हैंडल कर लेंगे. आपकी जरूरत नहीं, आप कैरी ऑन करिए. Okay, so she's basically saying go from here in a polite way. I insist, डॉक्टर सक्सेना. The next time she's going to push him away. No, he left. सबसे पहले दर्द कम करेंगे, इसलिए आपको पेन किलर दिया है, ओके? पेशेंट मैं हूँ और वो कंजी आंखों वाले डॉक्टर को मुझसे ज्यादा आप में इंटरेस्ट लग रहा था. डॉक्टर, The patient gets it right. Oh my god. Patient went for ultrasound. बेटीलाल, पेशेंट फुल फॉर्म में दिख रहा है. He was the one who was not 5 बार feeling उल्टी well. किया डॉक्टर मुर्गी वाला के ऊपर. सिक्सर का चांस है फुल ऑन आज तो. I have no idea what that means.
ये क्या हुआ रे? तेरे दांत को ये खून वीन दिख रहा है? So this guy is also हाँ भाई, bleeding. वो 1-2 दिन से मसूड़े बह रहे हैं. Usually this could be deficiency of vitamin C, some gum disease, dental decay. This is a question for the dentist. गिंजिवाइटिस हुआ रहेगा या फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हुआ रहेगा. जाके डेंटिस्ट को दिखा. ठीक है भाई. डॉक्टर अंसारी. बोलो सिस्टर. डॉक्टर, आप ये पेशेंट को देख लेंगे प्लीज, थोड़ा अर्जेंट है. Oh, so there is another patient now. सिस्टर, मुझे फीमेल डॉक्टर चाहिए. Oh, she wants a female. नाम क्या है आपका? See, patients have all right to Neha. ask for people. नेहा चुगलानी. सिस्टर, फीमेल डॉक्टर प्लीज. Should patients ask for a specific doctor? What do you all think? Just comment below, yes or no. सिस्टर, डॉक्टर मेल हो कि फीमेल हो क्या फर्क गिरता है? क्वालिफिकेशन क्या है ये मैटर करता है. पता नहीं दुनिया से भेदभाव कभी खत्म होएगा. So he's not happy because she asked for a female doctor. Okay. So is his ultrasound याद done? पहन लो, डॉक्टर साढ़े बस अभी आते ही होंगे, वो आपको आके अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाएंगे, ठीक है? So he's in a ward bed. Okay. Oh, see, that's a problem. So he should have a very quick ultrasound because he might actually be bleeding from inside. He might actually be taken to the operation to fix this. So what he needs is a quick ultrasound. Doctor! So he is bleeding inside. So his blood pressure went down. He collapsed. This is an emergency that needs to be taken immediately to the operation theater. But before that, many places do what is called a fast ultrasound, which takes few minutes just to quickly look if there is any blood inside the stomach. Yeah, man, this person is bleeding. He has to be taken to the operation theater. Vitals are crashing, pulse is 45, feeble low volume. So vitals are crashing, so pulse is going down, blood pressure is डॉक्टर going साहब, down. फ्लूइड रिससिटेशन इमीडिएटली. The डॉक्टर breathing से ना may also इमीडिएटली be अल्ट्रासाउंड going करना down. होगा. उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है. ओटी बुक करिए. वी नीड टू डू एक्सप्लोरेटरी रैप्रोटोमी. Yeah, so that essentially means open the belly and fix the problem. डॉक्टर से ना सर्जरी करके यू वांट टू ओपन नाउ. सिर्फ ये पता करने के लिए इसे प्रॉब्लम क्या है. Yeah. इस वक्त हमारा That's it, बेस्ट you ऑप्शन have यही है to- डॉक्टर साथ है. इंटरनल ब्लीडिंग का मामला है. पेंट की बेल्ट ने इंजर्ड ऑर्गन से खून. Ooh, you see there? When that needle is taken out, that tubing should have a red line of blood in there. So if there is no red line of blood, the IV is not properly placed. I say this because I do this every day. बेल्ट खोलते ही सारा खून बाहर आ गया. एंड जितना तेजी से एब्डोमेन हैज डिस्टेंडेड, लग रहा है इंटरनल ब्लीडिंग काफी ज्यादा है. हमें नहीं पता अंदर कितने ऑर्गन्स That's इंजर्ड है. डॉक्टर सिन्हा इज राइट. हम जितना जल्दी सर्जरी करेंगे उतना जल्दी अफेक्टेड ऑर्गन्स को रिपेयर कर पाएंगे. इनकी तबीयत खराब हुई है ना, सब मेरी गलती है. रिमझिम जी, इन्हें मलेरिया हुआ है. इसमें आपकी गलती नहीं है, मॉस्किटो की गलती है. That's a good one. आपकी गलती नहीं है, मॉस्किटो की है. होम टाउन में मलेरिया का काफी प्रॉब्लम है, वहाँ मलेरिया बहुत होता है. Well, malaria still continues to be a huge problem in many parts of the world, including India. When I did MBBS, when I did junior residency, I have seen a lot of malaria cases, unfortunately. So does most doctors in India. Although, interestingly, malaria does not happen in very high altitudes because the Anopheles mosquito, which transfers malaria, does not survive in high altitude. So Shimla, Ooty, these places shouldn't have malaria, technically. If I'm wrong, let me know in the comments below. Oh, we are in the operation साथ ही theater. more This is suction exciting. Let's see ब्लीडिंग what ज्यादा is है, going ऑर्गन्स to दिखाई नहीं दे happen. रहे. At it, Dr. Sam. Okay, surgery is on. I have seen the endotracheal tube tape being done that way in pretty much 2 or 3 episodes. So looks like this is a Dhadkan Zindagi Kii standard to put a tape that way, and that is not correctly placed. Dr. Saxena, please help. एक एक्सपीरियंस सर्जन सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं अपनी उंगलियों से भी देख सकता है डॉक्टर साथ है. आपको भी टाइम लगेगा. तो उंगलियों अब से नहीं कैसे अभी. देखेगा? इसलिए देखिए अपनी आंखों से और सीखिए. Okay, got it. Spleen has lacerations. Clamp. Okay. So spleen is bleeding. Blood So bank he से was 4 units of having a FFP and 2 bleeding from units the of spleen, whole which is blood an के लिए organ बात on the करिए. left side. And I hope So that's what was cross going match has on, already yeah. been done. दीपिका में स्प्लेनेक्टमी करनी होगी.
So many times the spleen has to be taken out if the spleen injury is pretty bad, and that's called splenectomy. So that's not unusual in major accidents. बहुत ही important organ है. MBBS का first lecture मुझे याद दिलाने के लिए thanks Dr. Sathe. Both are right. Spleen is an important organ, but also may have to be taken out if the injury is bad. डॉक्टर सक्सेना, मैं स्प्लीन रिमूव करने की जगह स्प्लेनिक रिपेयर प्रेफर करूंगी. Yeah, that's an option too. The surgeons can decide to either repair the spleen if the injury is not bad, but the injury is big. I mean, many times there is no choice. अगर splenic repair ने hold नहीं किया तो पूरी spleen remove करनी पड़ेगी. ट्राई तो कर सकते हैं. Maybe. I mean, if you think you can save the spleen, no harm in trying. पेशेंट पूरी जिंदगी एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा स्प्लीन के बिना. Spleen is a very important organ which protects against many different organisms like bacteria. So taking out a spleen will require lifelong medication because the person will become prone for infection. ऐसा लग रहा है जैसे सर में भूचाल आ गया हो. Oh, so this nurse is also sick. 3 सिस्टर को फ्लू हो गया है ना. हो सकता है किसी का इन्फेक्शन लग गया हो. So there is an infection that's getting spread. So mostly the doctor who was in the beginning might be spreading the infection. But here's the thing. I cannot think of any infection which can spread so rapidly. I mean, the most common infections are respiratory infections that can spread from one to other. Just recently we had COVID. Even COVID doesn't cause symptoms so quickly. So this doesn't seem like a respiratory infection. Let's see. तो लाल पीली गोली दिया मेरे को. वो खाने के बाद अंदर से शॉर्ट सर्किट बज रहे हैं. Okay, so the ward boy is sick, nurse is sick, the doctor is sick. There are 2 patients who are sick. This guy is even more sick now. So he started by having fever. He thought it's a small fever. Now he can't even move. So his fever must have gone up pretty significantly. Ui, ulti. Oh my God. जानबूझ के किए क्या? He was very happy in the beginning, but now he's upset. यूरिन पास हुआ? डॉक्टर, ये मेरे यूरिन में ब्लड क्यों आ रहा है? Hold on. Why is everyone having blood? Anyway, let's see. डॉक्टर महादेव, ये रिपोर्ट समझने में आपकी हेल्प चाहिए प्लीज. Why is he holding his head? He's also इसका मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं होगा. तो फिर और क्या हो सकता है? डॉक्टर अडवाणी, स्लो डाउन. डॉक्टर महादेव, are you all right? No, he's not. Dr. Chills, fever, rigor. Chills, fever, हॉस्पिटल में सबको rigor. फ्लू हो रहा है डॉक्टर महादेव. आपको भी वही हुआ है. Fever, rigor. How can you be so sure that rapid ये spread. सही है? कोई भी infectious disease हो सकता है ना? Exactly. It can be any infectious disease. But what is it? I have not come across any infectious disease that spreads so quickly. What can it be? Is there an infectious doctor watching this? Comment below. Oi! He is doing ulti after ulti. कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई आज हॉस्पिटल में. Yeah, that's true. That we can see. Some problem going on. डॉक्टर सिन्हा, वो डॉक्टर आडवाणी का कॉल है. कह रही हैं कुछ अर्जेंट है. So sounds like nothing might happen in the operation theater because everything is happening outside. We need your help. पेशेंट और स्टाफ सब बीमार पड़ रहे हैं. कोई इन्फेक्शन है जो बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहा है it seems. So that much we figured out. There is an infection spreading. डॉक्टर सिन्हा, something is off with my patients. पूरा स्टाफ बीमार पड़ चुका है. बुखार में आराम मिलेगा. It helps with fever. टेस्ट किए मैंने कुछ, बट रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए. Because pathologist also has diarrhea. Oh, को भी फीवर एंड हेडेक है. डॉक्टर मुर्गी वाला is also vomiting और डॉक्टर महादेव को भी चिल्स हो रहे हैं. So doctor after doctors are getting sick. डॉक्टर सिन्हा, आपके जूनियर रेजिडेंट्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते. डॉक्टर अडवाणी, आप पैनिक क्यों कर रही हैं? Calm down. Yeah, that's right. She shouldn't panic. But you need to know what the infection is, right? Before treating. Oh. He fell down. Prince. The ward boy fell down. He's having seizures, convulsions, fits. डॉक्टर सिन्हा, प्रिंस को ग्रैंड मॉल सीजर्स हो रहे हैं. पहले उसके दांतों से खून आ रहा था. अभी उसने दवाई ली और सीजर्स आ रहे हैं. Must be coagulopathy. डॉक्टर अंसारी, फिनोबार्बिटॉन दीजिए. स्टार्ट. Phenobarbital, that's the wrong medicine to give. Phenobarbital is the last medicine that's given in a seizure, not the very first medicine. It's a TV drama, so things can happen. But in real life, medicines like midazolam, lorazepam are given, and then phenobarbital is actually a last medicine. It can put people into coma.
So this is called phenobarbital coma and is a last treatment option that is used in medical ICUs. सिस्टर, सारे पेशेंट्स और स्टाफ बीमार पड़ रहे हैं, आप डॉक्टर खन्ना को इन्फॉर्म करिए प्लीज। डॉक्टर खन्ना तो सिक लीव पे हैं डॉक्टर सिन्हा। उन्हें भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, सर्जरी कैंसिल करके घर चले गए। आज इस फ्लोर पे सिर्फ आप और डॉक्टर सक्सेना ही सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर सिन्हा, I have never come across a situation in my almost 25-28 years of medical career where an infection has spread so quickly. So people are getting sick one after the other. Oh my gosh. You see the ward boy, he's sitting up. This cannot happen after a phenobarbital. डॉक्टर सिन्हा, पहले प्रिंस को मसूड़ों से खून आ रहा था, अभी नाक से खून आ रहा है। एक मिनट डॉक्टर, प्लीज एक एक करके बताइए कि किसको क्या सिम्टम्स है और आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। बीपी गिर रहा है 89/58। मैंने पहले ही कहा था पेशेंट एफएफपी और ट्रांसफ्यूजन पर रिएक्ट कर रहा है। सारे ब्लड प्रोडक्ट्स रोक दीजिए। डॉक्टर सक्सेना, रिपेयर के बाद भी जब तक टिश्यू हीलिंग शुरू नहीं हो जाती, ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक दिया, पेशेंट कैन गो इनटू सर्कुलेटरी शॉक, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट मर सकता है। Blood product reaction wouldn't be the first cause. It is probably bleeding from the spleen that is causing low blood pressure. मैं स्प्लीन रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं स्प्लीन रिमूव कर रहा हूँ। नहीं डॉक्टर सक्सेना, स्प्लीन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वी कैन गिव हिम आइनोट्रोपिक ड्रग्स and antihistamines. मैं स्प्लीन रिमूव कर रहा हूँ और मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। Okay, so that can happen. That's not an unusual decision. I think he might be right because the spleen may have to come out. If the injury is too bad, blood pressure is dropping, the patient is not stable. आप अपनी जिद के चलते पेशेंट की स्प्लीन रिमूव करना चाहते हैं? डॉक्टर साठे जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए। मैं एक सीनियर सर्जन हूँ, आप मुझसे। सीनियर सर्जन है, कोई जज नहीं है जो सीधा फैसला सुना दिया। If the senior surgeon decides the spleen has to come out, I don't see a junior surgeon arguing so much. I've not seen this because they're experienced, they know what they're doing. If the spleen has to come out, I think it's a decision they have to make. It's hard for the patient, but that might be the right decision for that patient. The tape problem. Every time I say it, I have a problem with that. पर आपको जल्दी से डिसाइड करना पड़ेगा। स्कैल्पल। हेलो। Oh, they're calling. डॉक्टर सक्सेना राहिल की स्प्लीन रिमूव करने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। क्या आप वापस आ सकती है डॉक्टर सिन्हा? डॉक्टर सिन्हा, आपने अपने जूनियर रेजिडेंट्स को सिखाया नहीं ओटी में कैसे बिहेव किया जाता है? Exactly. He has to behave properly with a senior doctor. I mean, he can question, he can raise his concerns, but they're not going to call a different surgeon. If they don't respect that senior surgeon, if they think he doesn't know what he's doing, he should not be working there, right? He should be fired. सर्जरी के दौरान क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से प्लान्स हमेशा चेंज हो जाते हैं डॉक्टर साथी। Okay, so looks like the spleen will come out. नहीं, आप लोग प्लीज इस फ्लोर से दूर रहिए। अगर कोई इमरजेंसी आती तो कोई तो होना चाहिए ना हैंडल करने के लिए। सिर्फ इस फ्लोर के सभी लोगों को आइसोलेट करना होगा। So isolation has to be done whenever there is infection. We saw this with COVID, right? Quarantine. I'm really curious to know what that infection is. Okay, she's reading the book. So that makes sense because this is such a rare infection. I have no idea what it is, which is spreading so quickly. It's not unusual for doctors to go read and then, come up with a diagnosis, especially when things are very rare. I don't think any doctor would see this every day. This might even be a made-up case. I don't know. Oh, he's vomiting blood. सिस्टर, वॉमिट एग्जामिनेशन के लिए लेके जाइए। All the people who are infected should be isolated. अमर को क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? जब से हम यहाँ आए हैं, अमर की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। What is going on, Amar साहब? आप थोड़ा दूर रहिए इनसे। देखिए, हम अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें आपको आइसोलेट करना होगा। That's right. She has to be isolated. So they don't want her to get infected, right? हो सकता है ये सब कुछ मलेरिया की वजह से ना हो रहा हो। हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन फैल रहा है, काफी लोगों को ये सिम्टम्स हैं। कैसा इन्फेक्शन डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि अमर और आपको दोनों को इन्फेक्शन हो ही ना। So that green thing means it's bile coming out of the stomach. It just means the stomach is obstructed. It doesn't look exactly like that. It looks very different. I've seen it. Oh, by the way, if you're enjoying this so far, don't forget to hit that like button. मलेरिया नहीं फैलता है, लेकिन इबोला जरूर फैलता है। इबोला? अच्छा ही हुआ ना कि मैं आ गया, क्योंकि आप इबोला सोच रही हैं। इंडिया इज नॉन एंडेमिक फॉर इबोला।
Exactly. Where did Ebola come from? There was an outbreak of Ebola hemorrhagic fever in 2014. I remember I was in America working in a hospital, and we were really very well prepared in case there were any cases. Fortunately, there were not many cases in most parts of the world except for Africa. This is a very dangerous problem. I don't know how it came to India. There may be TV shows, YouTube videos, and even movies on Ebola hemorrhagic fever. If you're interested, you can check them out. ऐसा भी हो सकता है ना डॉक्टर सक्सेना कि हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंसान हो जो हाल फिलहाल में इंडिया से बाहर जाकर आया हो. Maybe even a place like Africa. Oh, so they are saying somebody went to Africa, they got infected with Ebola and came to India? Wow. I have come across many people who have gone to Africa. I've never seen Ebola. नेहा जी, ये ब्रेसलेट आपका काफी यूनिक है. Thanks. अफ्रीका से लिया था. Anyway, now we know this episode was actually talking about Ebola hemorrhagic fever, and they made a connection of two couples who actually traveled to Africa, had the same symptoms, spread it to other people. Anyway, this seems to be an extreme case. Hopefully it should not happen like this in a real life. I do hope you enjoyed this episode. Don't forget to hit that like button if you've still not done it. Make sure you check this other videos on Dhadkan Zindagi Kii where I have reacted to. And I've also left all the videos in the description below. Take care, stay safe, I'll talk to you soon.